All right, so welcome to Sazur Media Insta Live. Ahem, कैसे हैं आप? What's happening? Finally, you're connected to us. Yay! I'm very well. How have you been? Good, good, good. सुबह से cooking, cleaning, eating, now living. It's same with everyone. Agree. It's the same So, with everyone. सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है अभी इन दिनों की अगर हम बात करें तो obviously we all are getting time for ourselves with our family जो अक्सर भागा दौड़ी में निकल जाता है and so many shows reruns also happening और आपका खुद का शो भी दोबारा से आ रहा है The Mytho show. So what do you want to say on that? Let's start with that only. I'm very happy and excited that it's running again and people are really liking it. I'm getting constant feedback on all platforms and people calling me also. They're sending me emails, so they're all loving the show again. I'm very happy to receive the love again for the show. So you played कर्ण का किरदार. कर्ण automatically एक बहुत ही intense character है and अपने आप में उनकी खुद की एक journey है. Yes. And you performed कर्ण जो लोगों ने बहुत connect किया and they love you as कर्ण. So आपने खुद ने कितनी मेहनत की थी when it comes to Ahem coming as a कर्ण? हाँ आपने बिल्कुल सही कहा. कर्ण अपने आप में ही एक inspirational character है. People just love this character. Because of his journey, because of the kind of challenges he faced in his life, and still he emerged victorious. And people always find him, an inspirational character. When I portrayed Karna, I wanted to make him, I wanted to think of him as a human being. And I wanted to relate and try to find out what exactly he must have gone through and try to relate. Put myself in his shoes. That's how you act. That's how you reach the character. That's how you try to understand its psychology. Correct. And that's how you portray. Correct. That's exactly what I try to do. मैंने बस ये कोशिश की कि I should try to portray him as a human being. जो उनकी suffering, Not as a god. जो challenges face किए होंगे. That's what I try to do, and I think it's connected well with the audience, and which is why probably they're liking the portrayal and everything else. No doubt. So जब आप ऑलरेडी ये शो कर रहे थे तब तो आई एम श्योर कि इतना वक्त नहीं मिलता होगा कि आप अपने सारे एपिसोड्स देखें. Now the rerun is coming. Now the महाभारत दोबारा से आ रहा है. So are you watching it? Actually, while I'm very happy and excited, it's running again and people are loving the show all over again. But I have not been watching it of late. क्योंकि मुझे लगता है एक बार कर लिया, देख लिया. There's no point watching the same thing time and again. You tend to become overcritical because मैं देखूंगा लगा यार ये ऐसे भी कर सकता था, ये भी कर सकता था. But in a given situation, you make a choice and you stick to it and you portray, you perform a scene. Choices can be more than one. दूसरी बार आपको वो point of view नजर आ सकता है, तीसरा नजर आ सकता है. So the journey it just keeps going on. तो एक बार देख लिया शुरू में जब आपने किया. Of course, whenever I got time, I wanted to go back, revisit, see क्या कैसे किया मैंने, visit whether it's getting translated on screen or not. एक बार उस समय जब प्ले कर रहा था, I did it. अभी वापस जाके no, I'm not watching it. Yeah, and there is no need to judge yourself, right? Yeah, It will be like more judgmental now. I tend to become overcritical. Sorry, आपकी आवाज बीच में कट जाती है. I don't know. I'm getting full network somehow. मेरे पास पूरा नेटवर्क आ रहा है. I can hear you clearly. अच्छा ठीक है, it's okay. So मैं कह रही हूँ अब आप अपने आप को obviously उस किरदार को जज नहीं करना चाहोगे जो आप एक बार ऑलरेडी कर चुके हो, right? Yes. बिल्कुल वही बात. So आपने उसके बाद में it comes to Brahmarakshas also, one more show you did, and you did one more mythological Vikram Betal जिसमें you were playing the role. तो ये जो माइथो वाला और ये सुपर नेचुरल वाला जो है ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है क्या अहम से? क्या ये सुपर नेचुरल माइथोलॉजिकल क्या जुड़ा हुआ है आपसे कहीं ना कहीं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं. इनफैक्ट महाभारत के जस्ट बाद I didn't want to do any costume drama immediately because it's in our profession it's very easy to typecast an actor. If you portray character successfully and people liked you, they want you to repeat the same thing time and again. So I didn't want to do it. So I did a show called Manmarziyan for Star Plus right after Mahabharat. It was a different show altogether, very stylish and that was doing well, but somehow didn't run for so long. Uske baad, see, I don't do TV that frequently because
आपको ही पता है बहुत सारे लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं लड़कों के लिए टीवी पे काम करने के लिए, 2-3 जॉनरास उसी में आप करते रहते हो, कॉस्ट्यूम ड्रामा होगा, माइथोलॉजिकल होगा, हिस्टोरिकल होगा, सोशल होगा, ये 3-4 और उसमें एक सर्टेन रेंज होती है, उसी के बीच हम आमतौर पे करते हैं। तो फिर ब्रह्म राक्षस, दो द जॉनरा वाज डिफरेंट, दो इट वाज सुपरनैचुरल, but it was just a backdrop of it. Essentially, it was a love story. It was I love the the character because he was nothing like me. He was flamboyant and over the top and very 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 expressive, pretty unlike me. You know what I mean say? And it was like a typical masala Bollywood movie. तो मैंने कहा वो करना मेरे लिए चैलेंजिंग होगा. So after मन मर्जियां I did that ब्रह्म राक्षस. उसमें वो डांस करता था, रोमांस करता था. हाँ, बीच में ब्रह्म राक्षस आता तो लड़ाइयाँ भी होती थी. And in the end, yeah, I had to become Narasimha in order to fight with him. But that was towards the end. Essentially, it was a very Ranveer Singh like character. So I really wanted to try this out. So that happened. Then again, बहुत दिन बाद when I was approached for this one, Vikramaditya, मुझे लगा कि यही 3-4 जॉनरा वर्क करता है टीवी पे. So I gave it a shot. I did it. और हाँ, it was fun. So when it comes to television, you yourself said, and obviously everybody knows कि कहीं ना कहीं character typecast हो जाते हैं. अगर किसी ने बहू किया है तो वो अक्सर बहू में ही नजर आती है. किसी ने अगर विलन किया है, नेगेटिव किया है, तो उसे पॉजिटिव मैनर में देखना टफ हो जाता है ऑडियंस के लिए. सो यू टू फील कि कहीं ना कहीं टेलीविजन एक तरह से बैरियर है व्हेन इट कम्स टू योर कैरेक्टराइजेशन एंड टाइपकास्टिंग. Sorry, I didn't get the question. My question is कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अगर आप कॉन्स्टेंटली टीवी करते रहेंगे तो टाइपकास्ट हो जाएंगे? बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा होता है, सीधी सी बात है. मैंने पहले ही कहा कि see, as an actor, I cannot judge myself, but एक एक्टर वो होता है, उसका काम होता है जो भी कैरेक्टर हो उसको अच्छे से पोर्ट्रे करना. और I think I'll be able to do it. No, और किया भी है, ऐसी बात नहीं है. बट मैंने कहा कि जो आपका जिसके साथ आप ज्यादा सक्सेसफुल होते हो तो एक एडेड बेनिफिट एडवांटेज नजर आता है कि यार इसको लोगों ने पसंद किया है, तो इट्स सेफर टू ट्राई विद द सेम similar kind of roles because people have actually already liked him in that particular role. So वो डर होता है. तो वही मैंने इसीलिए मेरा कॉन्शियस डिसीजन था कि immediately after Mahabharata I won't be doing any costume drama. Vikramaditya did after 5 years I think. Exactly. And now महाभारत दोबारा से आ गई है. दोबारा से कर्ण सबको याद है एंड दोबारा से they are loving you as कर्ण. अहम बहुत सारे आपको भी मैसेजेस में कमेंट्स आ ही रहे होंगे, I'm sure. So now when after lockdown, how you see yourself? Like you want to do web, you want to do television, you want to go for something else. What are your plans? See, I've been working on something before the lockdown, so I'll have to resume shooting and finishing it off. That won't take much long. I'll talk about when the time is right. लेकिन your voice is cracking in between. Your voice something good. किसी भी play. Yeah, that's what I said. The signal. There's some problem with the signal. Is it better now? Is it better now? Now it is better. Yeah. मैंने कहा the idea is to keep working and do something better than the previous project. So I don't know. Like I said, वो project होगा, then I'll be open to working again. अब किस medium में कैसे exciting काम आता है, it all depends. I just want to do something like everyone else. You want to do something good, which you can actually connect with, you can put life into. So that's what I want to do. Medium's not a constraint, whether it's TV, web or film. जहाँ अच्छा काम होगा, I'll do it. So Ahem, are you also thinking about some character? Because whenever I ask an artist कि वो किस तरह का किरदार अब सोच रहे हैं खुद को देखने का, because you did a Maitho, you did very happy-go-lucky guy also, then Narasimha, then Vikramaditya. So you already did many characters, correct? So now are you yourself also thinking to see yourself in the place of a cop or some detective or some thriller or something dushum types? Are you planning for something like action drama? See, action is a genre where I'm very comfortable with. I'm trained in martial arts, so action comes naturally to me. तो वो तो मैं कभी भी करना ही चाहूँगा और definitely. लेकिन
मैंने बहुत कहा, अभी छोटा सा करियर है, बहुत सारा, मैंने बहुत सारे काम है जो मैं करना चाहता हूँ, आई कैन नॉट इवन नेम देम। मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स जो मैं प्ले करना चाहूंगा, वी कैन नॉट इवन गो फॉर अ क्लीशे रोल लाइक कॉप कर लो, ये कर लो, देयर मेनी स्टोरीज व्हिच वन वांट्स टू बी पार्ट ऑफ, प्रोवाइडेड यू नो आई गेट इस तरह का काम हो टीवी पे, वेब, इनफैक्ट वेब पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, और आफ्टर द लॉकडाउन आई एम श्योर द फिल्म इंडस्ट्री विल टेक टाइम टू गेट बैक ऑन ट्रैक, क्योंकि अभी इमीडिएट लोग सिनेमा थिएटर हॉल सिनेमा हॉल में जाएंगे नहीं, तो वेब इज गोना be very crucial. So, and it's exciting space, a lot of exciting works happening there. कुछ कमाल के shows हैं, मतलब you're completely blown away. और as a creative person, I tell you what, it's very exciting to be part of web, क्योंकि फिल्मों में 2 घंटे में आप कितने कैरेक्टर्स को दिखा पाओगे? आप लीड हीरो हीरोइन नहीं होगा, बस हीरो हीरोइन और विलन या एकाध रोल होंगे, कैरेक्टर्स होंगे जिसको आप शायद पूरी तरह से दिखा पाओगे, बट वेब में you have got so much time and scope to portray different all the shades, and so many characters can be really important to the show, and that's a fun part. So creative people they do want to do good shows, because वहाँ पे opportunity और ज़्यादा है. You can show the backstory, you can show the character's journey. 2 घंटे का सिर्फ time issue नहीं है, there could be much more. So it's like agree, no doubt. So ये तो हमने किरदारों की बात की, और obviously I'm sure there are endless characters which you can play, definitely. So now coming to your things, hobbies and all. So अभी lockdown में we all have so much time. Like shoot नहीं है, schedule fixed नहीं है किसी का भी, कभी भी सोना कभी भी उठना. So you have any particular schedule fixed for yourself? Yeah, you're also in a chill mode right now. नहीं, कोई शेड्यूल नहीं है. कभी रात के 4 बज जाते हैं, कभी 9 बजे ही सो जाता हूँ. It all depends. It all depends. No fixed schedule at all. So the idea is, जब इतना टाइम होता है, then it's a blessing in disguise, I would say. Though it's a bad scene out there. World economy की हालत खराब है, अपनी इकोनॉमी, लोग मुसीबत में हैं. But at the same time, you can sit back and introspect, know more about yourself. How can you be a better person or better actor, or what are the areas you want to improve? It comes to your personality, Correct. It comes to your craft, it comes to your relationship, everything. So, in a way, अगर ऐसे देखें on the hindsight, positive note पे, आपके पास ये एक opportunity है. You can take so much out of it. You can be with yourself, try to find out so many things about yourself. That's so interesting at times. So, you have done taekwondo. You learned taekwondo. You know martial arts and all. I'm sure you must be working on your acting skills also. Are you also working on your singing? I'm not working. See, singing is just a hobby. I mean, I लेकिन ऐसा नहीं, I can't say that I'm a singer or something. Yeah, I like singing. जैसे आपको भी पसंद होगा, बाथरूम में गाने डालते you must be singing, or when you're alone. So it's just like that. So we really want you to listen you right now. ठीक है, I'm not saying you are a perfect singer, but आप कुछ गुनगुना दीजिए अपने audience के लिए. Why not? Yeah, I just want to set the expectations right for everyone. ऐसा नहीं लगना चाहिए, अच्छा, I'm gonna sing. I'm just okay. All right. पहली बात तो ये कि आवाज, can you hear me properly? हाँ, I can hear you. If I sing, will my singing reach you? It will? Okay. जी, पहुंचेगी. Okay. एक गाना बोलते तो समझ नहीं आता कौन सा गाना चूज करूं, कौन सा गाना गाऊं. I mean, it's जो आपके मन में आ रहे, बैक टू बैक 3 गानों का आप मैशअप भी बना के गा सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay, here it goes. बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों. मौत ना आई तेरी याद क्यों आई, हाय लंबी जुदाई, 4 दिनों दा प्यार
तजुर्बा बड़ी लंबी जुदाई होठों पे आई मेरी जान दुहाई हाय लंबी जुदाई. All right, that's it. Wow, this is not bad, huh? This is not a bathroom singer wala gana, I swear. Acha, it's not bad. Okay, thank you. No, it's not at all bad. It's very good. All right. See, we are getting so many hearts also, and people are saying, "Oh my God, you're so talented. You know singing also." Thank you. Okay, बिना so म्यूजिक के गाना अलग चैलेंज होता है. I mean, there's no surtal. How do I sing? There's no rhythm, so it's a anyway. But okay. no, but it was really nice. Good. Thank you. Okay, so when it comes to reality show, if खतरों के खिलाड़ी या Big Boss offered to you, what you will choose? Of course, खतरों के खिलाड़ी. Actually, my question is wrong. I should have asked you if you got an opportunity to go to Big Boss, will you go? Well, I don't know. You never say never in life, but you never know what happens in future. Okay, so right now, आपके recently there was one video which was everyone is sharing, जो आप लोग का launch था महाभारत का, जिसमें आप लोग ने सबने stage पे खड़े होकर you guys performed together and sang a song of Mahabharat. Have you seen that video yet? I think the video you're referring to is the one in Indonesia, right? All of us singing on the stage Yeah, just in our Indonesia. casual attire. Indonesia. Correct. Yeah, it was Indonesia Casual वाला. bathroom में ना? हाँ जी. Yeah, so it's a video from Indonesia. So आपको वो वाला महाभारत का जो आप लोग ने सबने स्टेज पे Are you परफॉर्म किया था, you remember that song? आवाज आ रही है आपको? आवाज आ I रही think है? I've lost you. Can you hear me now? Hello? Hello, yeah, can you hear me? Can you hear I lost me? you for a while. Yeah, now I can. Yes. So I'm yes, saying yes, आपको वो याद है, वो गाना याद है जो आप लोग ने इंडोनेशिया में परफॉर्म किया था सबने महाभारत का? Hi, Brahmarachas. Hi, Madhumita. I can see your name flashing. Are you back? Yes, I'm here only. Can you listen? आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? I cannot hear you. अयो, ये वीडियो बार पॉज हो रहा है. Yeah, you're back now. I can hear you now. I can see you. Can you? Can you see me? Yeah, you back now. I can hear you. I can see you. Okay, so finally मेरा सवाल basically I want to know, आपको वो गाना याद है जो महाभारत का आप लोग ने इंडोनेशिया में परफॉर्म किया था? मैं बीच में भूल सकता हूँ, लेकिन है कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, वो वाला ना हमारा टाइटल थीम सॉन्ग. Yes. Okay, हाँ तो याद है शायद. So I want to listen that. We can hear that. That's why I'm asking that. अच्छा. Okay. आपको याद है? No. There is a problem in the video. It is getting paused. And the video got paused. Can you hear me? Should I connect you again? I'm losing connection. Same here. Can I? Okay, now it is clear. So yes, I'm waiting for the song. 2 lines of that theme song of Mahabharat. है कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की,
है कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की। अब आगे याद नहीं आ रहा। I'll have to get the lyrics. If I get the lyrics, I can sing it for you. Do you remember? Why did you sing along? I can't. अभी हमारा कनेक्शन तो वैसे ही बार बार टूट रहा है। Okay, just give me a minute. Yes, Okay. yes. All right, here it goes. है कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, सार्थ की कथा परमार्थ की, शक्ति है भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। Yeah, it goes like this. I can sing the whole song. थोड़ा सा rhythm. No doubt, and it gives goosebumps. Huh? The theme song gives goosebumps. Yeah, with the music and everything else. Yes, when you actually Exactly. sing it. Agree. Yes. Agree. In fact, So हमने गानों की quite a few nice songs, huh? जो signature songs थे कुछ warriors के, of course अर्जुन के, कर्ण के, कृष्ण के टाइम पे जो music आता था background पे. In fact, the music was fantastic. अच्छा, आपने पुरानी वाली रामायण और महाभारत देखी है? जो Hi, हम लोग ने सबने डीडी पर देखी है। Hi, I'm watching Mahabharat only for you. Thank you. I think I've lost you. नहीं, here I am again. I can see you. So okay, can you see me? Yeah, I think. Can you hear me? तो इससे पहले कि हमारा कनेक्शन पूरी तरह से कट हो जाए, I don't know what's happening with the network today, but मुझे full दिखा रहा है. So जाने के पहले, what do you want to tell to all your fans and viewers, because this is the time to be strong and to be emotionally strong. Most important. So how to be emotionally strong? What do you want to say to all? Hello. I'm asking, emotionally strong रहने के लिए क्या कहेंगे अपने fans? अच्छा, emotionally strong रहने के लिए क्या कहूँगा मैं? See, every challenge gives you opportunity also. I know it's a tough time and it's easier said than done. It's. I know it's going to be a tough. We are going to face tough time ahead. Economy में trouble होगा, world economy में trouble हो रहा है, और ये pandemic इतनी जल्दी खत्म नहीं हो पाएगा क्योंकि till the time we get the vaccines and we have proper mitigation, it's going to be a little tough time for us. We'll have to be very cautious in order to take precaution whenever you step out, venture out. But all said and done, we will emerge out victorious. Just that, stay positive. Do the best you can. Try and give the best to your family, to yourself. Or this too shall pass. I mean, it's a phase. So just stay positive. और हो जाएगा. अच्छा बुरा सब टाइम बीत जाता है, ये भी बीत जाएगा. There's nothing to worry about. Just try and follow the guidelines. Very important. Lockdown में जो government आपको rules regulation lay down कर रहे हैं आपके लिए, just try to follow them. Stay safe, stay indoors. जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, it'll be fine. Yes. No doubt. So it's better to be safe. It's better to be happy. And you're in Mumbai only, ma'am. So everything is sorted at your area? No, nothing sorted in Mumbai. You're also in Mumbai, right? Yes, I'm also in Mumbai. I'm asking about the area where you stay. 10,000 plus cases. हर तरफ cases हैं. I just fear that it doesn't get worse with the passing days. अगर यहाँ भी रुक जाता है, then still fine. Mumbai, it's a tough scene out here. In fact, जो लॉकडाउन में रिलीफ दिया गया था, जो थर्ड स्टेज आया लॉकडाउन का, उसमें जो कई सारी चीजें ओपन की, इंक्लूडिंग अल्कोहल शॉप्स एंड ऑल. सो is this a right decision, or you don't feel कि नहीं यार थोड़ा बंद और रहना चाहिए था, इतनी जल्दी नहीं खोलना था? You don't feel that? See, realistically, there's one way to think emotionally when you say you might feel कि नहीं सब बंद होना चाहिए, but you have to think इकोनॉमी भी चलानी होगी, गवर्नमेंट को भी लॉकडाउन कब तक रखेंगे?
प्रॉब्लम हमारी ये है, इनफैक्ट यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन। जो बेचारे मुश्किल में हैं, उनका सब्र का बांध टूट जाता है, दे वांट टू स्टेप आउट, हो गया जो होना है हो जाए। बट आइडियली रिलैक्सेशन इसलिए था कि आपको जो जरूरत की चीजें आप ले सकें। लॉकडाउन में बहुत परेशान हो गए होंगे लोग, तो उनको रियायत दी गई। आपकी आवाज अचानक से बंद हो गई, आपकी आवाज। कैन यू हियर मी नाउ? कंटिन्यू। कैन यू हियर मी नाउ? नो? एक सेकंड, आई थिंक सम। हेलो? Yeah, can you hear me? या नाउ आई कैन हियर यू। Yeah. सो आप बोल रहे थे इकोनॉमी के बारे में। हाँ, मैं कह रहा रिलैक्सेशन इसलिए दिया कि जिनको मुश्किल है, मुसीबत है, वो बाहर जाके कुछ काम कर सकें या तो जरूरी चीजें शॉप कर सकें। लेकिन अब उसका गलत फायदा भी तो लोग उठाते हैं ना। तो और हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इट्स सो डिफिकल्ट टू मैनेज कंट्रोल ऑल ऑफ देम। आई थिंक द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू इट्स बेस्ट, एट द सेम टाइम वी हैव टू बी अ लिटिल मोर रिस्पांसिबल। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर, और जो नहीं है थोड़ा सा और ध्यान देते, दैट्स ऑल आई कैन से। क्योंकि जितना इसका सोल्यूशन सिर्फ ये कि आप अपने प्रिकॉशंस लें और सोशल डिस्टेंसिंग करें, अपने आप को सेफ रखें, घर में रहें। उसके अलावा कोई चारा नहीं। मास्क पहने, अपने आप को क्लीन रखें। सो we'll have to And in fact, if we especially talk about our industry also, तो मतलब I guess अभी और वक्त लगेगा खुलने में। हमारी इंडस्ट्री को तो बहुत वक्त लगेगा। एंटरटेनमेंट ऐसी, पहले आपको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, फिर एंटरटेनमें आएगा। और जब फाइट बेसिक नीड्स की होगी तो एंटरटेनमेंट तो अपने आप। मैंने पहले ही कहा कि ये थिएटर, मॉल्स, ये सब ओपन होने में बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज एक जगह लोग जमा नहीं हो सकते। इसीलिए वेब इज गोना बी द बिग थिंग, क्योंकि और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। फिल्म के लिए भी, सीरियल्स के लिए भी शूटिंग शुरू होने में वक्त लगेगा। आई थिंक 3-4 महीने में जब प्रॉपर गाइडलाइंस और सेफ्टी के साथ शायद शूटिंग शुरू करें, बट इट विल टेक सम टाइम। और खासतौर से मुंबई में तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे केसेस बहुत ज्यादा हैं। I know, it's increasing day by day, which is not good thing. So last time सबको यही मैसेज देंगे और कहेंगे कि आप लोग जहाँ हैं सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड सारे प्रिकॉशंस लीजिए एंड बी पॉजिटिव, डोंट गेट इमोशनली वीक and just be strong, right? You said it, Shruti. Yeah, exactly. That's what it is. Okay, thank you so much, Ayan, for joining us, and I hope you enjoyed this conversation. I did. Thank you, and hope you enjoyed it too, and all of you. Thank you, guys. I'll see you soon. Bye. God bless you all. Actually, there are so many fans of yours from Indonesia also, so just give them some message, na? Indonesian fans are also here. Yeah, they've been very kind to all of us, and they've been very loving. They're all so loving. They express themselves so openly. They show their love to you. They don't hide anything. And I've got great, all of us, whosoever has gone to Indonesia, they've got a great experience, and I just want them to be happy and safe also. I don't know what the scene out there, but you guys also, if it's required, please stay indoors, take care of yourself, stay safe and happy. God bless you all. और रमजान भी है, रमादान as you call it, रमादान इंडोनेशिया, हमारे रमजान भी कहते हैं वहाँ पे रमादान. So correct. Happy fasting, stay safe, take care, God bless you all, and God bless you all. Thank you so much for connecting to Passport Data. Sorry, I just want to say thank you to our friends out here in India also. They're also very kind and so loving. We know each other so well. Anyway, I'll see you soon. God bless you. Thank you so much, Shyam, for connecting to Salzburg Media Insta Live. Thank you for being with us. Thank you, Shruti. God bless you. Take